Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Prathna. Good afternoon, Payal. Good afternoon, Priyanka. Good afternoon, Payal. Good afternoon, Madhuri. Huh? Good afternoon. Good afternoon. You corrected yours, na, Madhuri? That money wala thing? अभी तक मैं की नहीं हूँ, आज पक्का कर लूंगी. एक्चुअली थोड़ा अभी आई हुई ना दूसरी जगह. आई एम बिजी राइट नाउ इन माय इन-लॉज हाउस. टुडे आई विल डू डेफिनेटली. Do that, huh? हाँ, श्योर. थैंक यू. सब मैं क्लास कर लूं और बीच में बात मत. Wait for some more time to join in. So meanwhile, we can share how was yesterday's experience. क्या याद था सबको खाने पीने से पहले? Yes. Yes. याद था. याद था. So did you feel any difference in the flavor or the taste of any food? Yesterday, my kids like बोले कि बहुत ही अच्छा बना, extraordinary. Wow. That's wonderful, Priyanka. I made the thing like a saute vegetable in 5 minutes. So they said I really came out really nice. So maybe I was cooking that time and I was giving the gratitude. So हो सकता है. Never doubt, just allow. So it's like not maybe, it was because of your gratitude. Oh, it was right. As you said, I played the That game game? with my daughter. Wow. The gratitude, the glad game. She gave me such situations. I was speechless. Mama, you're going somewhere and your mobile fall from the car and it broke into pieces. Mama, you got mobile and it just fall off from your hand and it broke into many pieces. What are you going to do? And I go, Navya, I think there's no choices. Let's not talk much about it. So you can still be glad at least you are with me. You know, I can buy a new one. That is okay. In that situation also, you can be glad about so many things. That's just one phone. It's okay. You are with me. I have money. I can always go back to the place I want to. So I'll get it repaired. Many situations where I was thinking what to answer. प्रार्थना, इसी बहाने नया फोन मिलेगा. इसी बहाने सबसे लेटेस्ट फोन आप खरीदेंगे. वो पुराना मॉडल हो गया था, लेटेस्ट वाला खरीदेंगे. क्योंकि जितने फोन मैंने खोए हैं किसी ने नहीं खोए होंगे. और हर बार सबसे नया वाला मिल जाता था. पुराना खोता नया मिल जाता. तुम इसीलिए खो रही हो, इसीलिए वो भी जा रही है. अब खोना बंद कर दियो. आप बोल दिए कि अब खोगी तो नोकिया का बटन वाला फोन दे देंगे तुमको. अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं. ओके. तो और कल का मैजिक इंग्रेडिएंट का, did you guess every time you cooked or you had? I did once or twice. Yeah. I could not remember all the time to do that. हाँ, so उसमें वो भी था ना, even if you forget later on also you can do that. Also you can pay gratitude. कल के चैप्टर में था ना. Try to remember again and again. I think. ये सबका एक तो स्ट्रक्चर बना लो. इवन वो प्रैक्टिस में आते आते it will be part of our life. Anyway, सबका तो लाइफलाइन है. Even if you forget, you can always, gratitude. Payal, I am doing this since 7 years. Oh wow, wonderful. I am linked to one स्वाध्याय. उसमें हम लोग को ये बताते हैं करने के लिए. Prayer also before eating food. Right. उठने के बाद, then dinner से पहले, and then in the night. Okay. मतलब whenever you are having food.
तुमको क्या लग रहा है हम बेवकूफ हैं मॉर्निंग क्या? व्हेन आई वेक अप, हम अपना काम छोड़ करके तुमको दे रहे अरे हैं बात कर रहा है ना, मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, देन बिफोर ईटिंग लंच, Right. प्लेट है मेरे पास, प्लेट है, एंड देन बिफोर ईटिंग डिनर, हाँ एंड देन इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग. अभी ओके तो ठीक है, रॉक वाला, हाँ रॉक वाला भी रहता है एंड सन में ये भी रहता है. ओके सो Basically, व्हाई it is I am praying for to the God हाँ for it the is food okay, He it is is your giving. belief. Ah, yeah, Universe yeah, या God or whatever it is. yeah. That's wonderful. Thank you, So thank you you. must be having abundance of food. कभी भी ये नहीं है lack of food नहीं है. और मालूम है, जब मैं ये गा एक्चुअली क्या है, गीता के श्लोकास है. Okay. तो when I'm cooking also ना, तो मैं ये श्लोकास गाती हूँ. Oh wow. तो एक, हाँ, because 7 years से कर रही हूँ, तो obviously I will remember three श्लोकास है. तो while cooking also जो खाने के श्लोकास है ना, तो वो मैं बोलती रहती हूँ, चैंट करती रहती हूँ. Will you believe? I mean, touch wood, खाना बहुत अच्छा बन जाता है. No wonder with so much of blessings and prayers obviously अच्छा बनेगा. So we have like life example here Madhuri practicing from past 7 years. So this shows कि it is effective. You know? और उससे आपका soul and everything because food तो ऐसा है जो पूरा अंदर जा रहा है. It cleanses your entire body, your soul, everything. It is so important. जो हम लोग कभी करते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे खाने से पहले. बस फूड आया, बस दबा दब गॉबल डन. You know? So that's तो very मैं भी पहले तो वो ही करते थे. खाने का बस वेट करना. स्कूल डेज में याद नहीं है, टीचर्स के टाइम भी टीचर से पढ़ा रही है, यार टिफिन ही खत्म हो गया. absolutely. Still remember those days. ठीक है, better late than never. Or and everyone has seen that movie Pollyanna. Anyone who has seen? नहीं नॉट देखा? रियली, अभी नहीं देखे. Not yet, yeah, not yet. अभी टाइम, सीरियसली थोड़ा सा टाइम का वो हो रहा है. अदरवाइज विल वॉच बाय द वीकेंड एक्चुअली. हाँ, वीकेंड में देख लेना ना फैमिली. वीकेंड में बच्चों के साथ देखनी है ना, इसलिए वीकेंड. ओके. तो और वो राइस इसी वजह से एक्सपेरिमेंट, आई आल्सो आस्क फॉर दैट राइस एक्सपेरिमेंट. वो जरूर करना बिकॉज अभी स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 21 days, you know, to see. I'll show Oh, my yeah. card tomorrow. एक्चुअली पायल, हाँ वो राइस एक्सपेरिमेंट इसलिए मन नहीं कर रहा है कि यू वी हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड्स फॉर so दैट you सेकंड can, जार. instead of 8, you can stop that. Use 2 jars. One is for I love you and And second one is वाला में ignore. ignore Yes. को, and but it should not be kept together, you know. Okay. दो अलग रूम में या एक रूम में भी, you know, apart एकदम. एक ही टेबल पे भी मत रखना. तो एक को टोटली या तो इग्नोर कर दो और एक जार में जस्ट I love you and you keep giving all your love and gratitude and everything. So can we keep it in the kitchen? Like kitchen में भी रख सकते हैं, एक काउंटर पे और एक कहीं फ्रिज के ऊपर या anywhere. मतलब लेकिन there should be gap, you know. अगर एक ही जगह पे Yeah. अच्छा गैप होना चाहिए. उसका वाइब उसमें ना आए. We can keep in plastic डब्बा also. अन्य प्लास्टिक में आई वुड से इतना नहीं करेगा. अगर ग्लास जार हो तो ज्यादा बेटर है. You know, plastic Actually, I'm in my in-laws Like a place. jam bottle, jam bottle या कुछ में भी चलेगा. चलेगा. While I'm in my in-laws place, joint family में ना, तो पता नहीं मिले नहीं मिले. कोई बात नहीं. When you go back, तब वहाँ कर लेना. Okay, okay. It is just to see, you know, what role does this, you know, just giving love and, you know, all your prayers to same thing. और एक को ignore करने से क्या होता है? And it is a, you know, proven experiment. It has already been experimented and so many of us have already done, but I'm still doing again. और उसमें पानी मत डालना, just the boiled rice. Okay. Okay, so today is again a very interesting chapter. Welcome to the next reading session of the book, The Magic. And today we are on day 9. And today's chapter is The Money Magnet. किसको लाइफ में मनी नहीं चाहिए होता है? It's not something negative. Of course we need it. हम लोग के ड्रीम्स, बच्चों के ड्रीम्स, बहुत कुछ है. No, as long as we are not envious of others' money, it's okay.
to want money. Why not? बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं. So who wants money? Money हर जगह से pouring करे. So this is very interesting chapter for them. How many of you want money to stick to you forever? क्योंकि आता रहे. Everyone. Everyone, exactly. जो Everyone. बोले तो भी मन में रहता है भाई आ ही जाए. I am sure. और कितने जन को ऐसा फीलिंग होता है मनी आती तो है बट टिकती नहीं है. It doesn't stick to us. आती है और चली भी जाती है. आपने ये नोटिस किया है, ये जब से मोदी जी ने ये डिमोनेटाइजेशन किया है तो ये वाला जो करेंसी आया है ये बहुत कम स्टेबल रहता है. लाइक as soon as you put it in your, हाँ मतलब वो एक होता है ना कि बरकत नहीं है जैसे इस वाली करेंसी के अंदर. लाइक कि ये जब से उन्होंने चेंज किए नोट्स और ये सारे. नहीं, मे बी उन्होंने तो क्या किया है उसमें चेंज होके हम लोग का ही थॉट्स एंड बिलीफ चेंज हो गया है. So now we'll work on. Maybe. Yeah, you're right. But expenditures increase हो गए इसलिए लग रहा है कि पैसा टिक नहीं रहा है, सब भागते ही जा रहा है. Yeah, because पहले एक्चुअली फर्क क्या है, पहले 2000 के नोट्स में आपको इतने सारे 100 के नोट्स दिखते थे, अब वो एक नोट दिखता है तो गायब हो जाता है. इसीलिए तो बोल रहे कैशलेस बनाओ, कैशलेस. हाँ, वो 2000 का नोट्स भी उतना ही जल्दी भागता है. एक बार दिया कुछ रिटर्न ही नहीं आता है चेंज में. अरे मेरे को तो इतना कंफ्यूजन हुआ, वो 2000 मेरे को 200 लगा और वो श्राद्ध में मैंने पंडित जी को 2000 ही दे दिया. अरे वाह, पंडित जी की तो ऐश हो गई. It was meant for him. Exactly. Yes. So today's chapter is all about money magnet. Very interesting. कैसे हम लोग मनी को अपने पास रखें. So let's start. Everyone can see this? Okay. Who would like to read today? I can read. I can also read anything. Okay, anyone. Who nominated? Name yourself. I can't see now. Divya. Divya, okay. So today's chapter is all about the money magnet, or as the picture depicts, money सब जगह से आ रहा है ऊपर से. कितना अच्छा लगेगा ना हम लोग बैठे हैं ऊपर से money का वैसे बारिश हो रहा है. And it is sticking to us. So we have to become that strong magnet कि money हम लोग के पास ही attract करे. So what we have to do to attract money? Let's read. The money magnet. Yeah. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. Yeah, it's the golden rule. We have read this earlier also, I think in Magical Money. The gratitude is riches and complaint is poverty. That means if we pay gratitude, we will always, always, always be wealthy. And whereas we complain, it will always take us to poverty. So we have to be full of gratitude all the time. It is the golden rule of our whole life. That's the next line. Yes, continue, Divya. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive, and the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings you riches. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत biggest reason of our of this money problem is because we just complain about money, or in the act of gratitude कि नहीं मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, but then also even if you crib about money, like हम लोग का electricity bill, आज तो इस महीने कितना electricity bill आ गया. Now that is also a complaint. That is also a complaint about money and not being grateful towards your money. So even we should not say that. अगर ये सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वी शुड वाओ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस मंथ का पे कर रहे हैं, देन वी कुड एंजॉय सो मेनी थिंग्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो
no charging of your phone and laptop, no TV, no geyser, no AC, nothing. So I'm so grateful. At least I'm able to pay the electricity bill. I'm being able to pay the electricity bill, which I am enjoying so many things in my life. So even we should not crib and complain. आप complain करो, आपको bill तो देना ही है. Complain करके दोगे या खुशी से दोगे. So what do you choose? देना तो है. तो कंप्लेन करते करते दोगे कि ग्रेटिट्यूड के साथ अच्छे से दोगे. इट्स ऑन अस, इट्स आवर चॉइस. सो ऑब्वियसली कंप्लेन करेंगे तो इट विल टेक अस टू पॉवर्टी, सो नो पॉइंट. तो इससे अच्छा वी शुड थिंक व्हाट इट हैज गिवन टू अस. rather we should feel blessed that we are capable of paying the electricity bill, and then whenever we pay the bill, thank you for the money. Yes, Divya, please continue. Yeah. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Exactly. जब मनी आ रहा होता है तो हम लोग तो बहुत खुश होते हैं. वो सब सोचते ही नहीं है कहाँ से, किसके पास से, कौन दे रहा है. वो सोचे मेरे पास तो आ गया. तो लेकिन जब हम लोग दे रहे होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन जरूर करते हैं. बट उसके एक्सपेंस में हम लोग कितनी सर्विसेज ले रहे हैं, वी फॉरगेट अबाउट इट एंड वी आर नॉट ग्रेटफुल टू दोज सर्विसेज. तो कंप्लेनिंग हैपेंस थ्रू पीपल थॉट्स. और जिनके पास ऑब्वियसली लैक ऑफ मनी होता है, दे आर लाइक मोर कंप्लेन. इतना तो मेरा सैलरी नहीं है, जितनी मेरी इनकम नहीं है उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो गया. You have to figure it out ना. You spend according to your income. No point complaining about it. तो उतना जितना हम लोग कंप्लेन करेंगे तो वो मनी आपके पास आएगा ही नहीं. That is also a complaint, and then if we complain, then it won't come to us. It will take us to poverty. So we should not complain about that also. And we should not be jealous. Jealous के बारे में लिखा है, उसके पास तो इतनी बड़ी घर है, इतना बड़ा घर है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, कितना कुछ है, टेरेस गार्डन भी है, और उसके पास BMW है और एस्कोडा है, whatever, the jeep is there. So we should not be jealous. Then also, we are not being grateful to money. So that is also a complaint and a negative thought. So that will also take us to poverty. So we should not be envious of any other people's riches. We should be grateful and we should be happy for that person. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Right. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you've received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Exactly. मतलब ऐसा लग रहा है ना, कितना सिंपल थिंग्स है. जब हम लोग किसी को बिल पे कर रहे हैं या मनी दे रहे हैं, वी शुड ये हम लोग को ब्लेसिंग देकर देना चाहिए कि मैं जिसको रुपया दे रहा हूँ उसके बहुत काम आए, ब्लेस दैट पर्सन, उसके बहुत फले. अगर आप उनको दोगे तो वो आप पे आएगा, आप फलोगे, आप प्रॉस्पर करोगे. इट विल टेक यू टू रिचेस. उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. बट उसमें अगर आप बोल रहे हो, हाँ मेरा मनी जा रहा है, ले गया, कितना दे दिया, कितना मांग दिया, then it is taking you towards poverty. क्योंकि आप उसमें बहुत सारा कंप्लेन कर रहे हो. So money will, it will not get attracted to you. In fact, it will dispel. So it's better not to complain about any money, money in any form, be it in bill form or ATM card or whatever it is. We should always be grateful for the goods and services we have received, using those money. जो भी बिल आया, हम लोग को उसकी ये सोचना है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो वी हैव रिसीव. वो हम लोग का क्योंकि काइंड में है, मे बी सर्विस, so it's not in cash, so we don't value it. But whatever we are paying, we are taking the services. So we should be grateful. अगर वो नहीं पे करते तो हम लोग को कैसे मिलता? आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करते तो how would we have enjoyed the services? सभी चीज का, घर, बिल्डिंग का मेंटेनेंस,
whatever it is. So everywhere, even if you're paying the bill, we should be grateful to money whenever we are paying. Yes, To be continue. grateful for a bill, think about how much you have benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. एग्जैक्टली तो इसमें भी जब हम लोग लोन या रेंट या इंटरेस्ट लोन लेते हैं और इंटरेस्ट सब सब जगह हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं इतना तो इंटरेस्ट ही ले लेता है अगर लेकिन ये लोन वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं होते इफ दे वुड नॉट हैव लेंडर्स हम लोग क्या कोई घर बाय कर पाते इतना तो हम लोग के पास वैसे कैश नहीं रहता है यू नो इन लिक्विड की हम लोग दे के विल बाय अ बिग हाउस फॉर आवरसेल्फ तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दीज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन वो नहीं होते तो हम लोग बहुत कुछ नहीं ओन कर पाते एंड ऑल्सो टू द रेंट अगर हम लोग पे कर रहे हैं घर का तो कम से कम एट दैट दिस इज अगेन यू नो इन नेगेटिव सिचुएशन यू कैन बी ग्लैड एटलीस्ट आई हैव अ होम टू स्टे अगर मैं रेंट दे रही हूँ एटलीस्ट आई हैव अ होम टू स्टे इनसाइड द हाउस नहीं तो कहाँ रह रहे होते अगर नहीं रेंट देने का मन नहीं है और कैश भी नहीं है देन व्हाट टू डू विल यू बी स्लीपिंग ऑन नो so we should be glad and we should be grateful to the people like landlords and also to the lending institutions because they have made it possible for us to live in a home or an apartment. If Continue. you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you've been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. या सो हम लोग के फोन बिल के लिए भी हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं बीट आर चाइल्ड फोन कितना बिल आता है तुम्हारा पता नहीं क्या करती हो दिन भर तो बट यू नो थिंक ऑफ इट अगर उसके बिना फिर कैसे होता है अभी तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑल द स्कूल एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नाउ वी वैल्यू मोर फॉर दिस इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल और कितनी जगह तो ये होता है ना पोस्ट पेड वगैरह हम लोग कितनी बात हम लोग बाद में पे करते हैं तो द कंपनीज आर ट्रस्टिंग अस दे आर गिविंग अस सर्विसेज बिफोर वी पे टू देम यू नो स्टिल वी आर नॉट ग्रेटफुल टू देम so we should be grateful to such companies also you know कि उन लोग हम लोग पे trust कर रहे हैं but we when we are paying the bill we are only complaining तो अगर हम लोग उसको में भी अगर हम लोग बहुत सारा blessing के साथ दे कि ये कंपनी बहुत you know बहुत अच्छा करे बहुत फले और तो even we are attracting money we will never come to know from where this money is coming you know never get into how but we will attract because we are being very grateful to the money किसी और को भी हम लोग देंगे bless करके ये नहीं है कि कोई हम लोग को दे रहा है तो बिकॉज मनी में भी एनर्जी है मनी ऑल्सो हैज एनर्जी यू नो तो किस एनर्जी के साथ मिल रहा है और किस एनर्जी के साथ हम लोग दे रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसीलिए बोलते हैं मनी को पर्स में या वॉलेट में और इन योर वार्डरोब में रखने से पहले यू नो वी शुड ऑलवेज टेक इट इन आवर हैंड एंड यू नो वी शुड ऑलवेज ब्लेस एंड गिव प्रेयर्स एंड देन पुट इट इनसाइड क्योंकि जो मनी दिया है आई डोंट नो उसमें कौन सी एनर्जी के साथ दिया होगा. So we should always, before keeping the money, you know, always bless and pray and give our gratitude and then put it inside, rather than just putting it. या तो किसी से लेके किसी को दे दो, because but then हम लोग को देना भी with energy डाल के देना चाहिए. Even if to a staff we are giving, यही बोलना चाहिए कि bless the staff, you know, through this money उनके बहुत काम आए. Yeah, continue. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay for it, I would add, thank you, paid. हाँ तो यहाँ पे Today, लिख रहा है दिस इज आवर टुडेज प्रैक्टिस एज वेल कि जब हम लोग कोई बिल हम लोग को
पे कर रहे हैं, पे करने के बाद वी विल ऑलवेज राइट थैंक यू एंड पे. लेकिन अगर कोई बिल जैसे ड्यू है, लाइक आई हैव माय इलेक्ट्रिसिटी, आई डिड नॉट गेट इट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है कल, नाउ आई एम सपोज टू पे, तो उसमें मैं लिख दूंगी थैंक यू फॉर द मनी. मतलब आई एम अबाउट टू पे, देन आई राइट थैंक यू फॉर द मनी. एंड जो बिल पे कर दिया है, देयर आई विल राइट थैंक यू पे. तो एक सर्कल ऑफ मनी, जो सर्कल ऑफ एनर्जी है, वो स्टार्ट हो जाता है. मनी का एनर्जी जो होता है, दैट स्टार्ट्स, सर्कल ऑफ मनी विल स्टार्ट. जो ग्रेटिट्यूड है वो भी स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ. अभी ये मनी में भी स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज लास्ट जो चैप्टर था दैट वाज मैजिकल मनी. जो मनी हमारे पास थे इतने ईयर्स से, उसको हम लोग ने ग्रेटिट्यूड दिया. अब फ्रॉम दिस चैप्टर मनी मैग्नेट वी विल स्टार्ट द फ्लो ऑफ मनी and in the flow of energy in the money area, right? So this is how we are starting. From now onwards we will do this with our bills. Yeah, Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." Next, find those 10 who bills. yeah, please hold. Those who Sorry. don't receive the bill, like electricity bill वगैरह अगर ऑनलाइन करते हैं, if you don't receive the receipt or whatever, then ऑनलाइन में हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एंड और या फिर वहीं पे हम लोग लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी व्हेन यू आर अबाउट टू पे, राइट? बिल्स ऑनलाइन के लिए. एंड इफ यू आर रिसीविंग इट, लाइक अपने घर पे अगर डिलीवर हो रहे हैं, देन देयर ऑन द बिल इटसेल्फ यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी. कंटिन्यू दिव्या. Divya, have you muted yourself? Kya? Oh, yeah, sorry. Yeah. Next, find 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you've paid, the more money you will magically magnetize to you. From Here, this day harness means लेना. जैसे कंट्रोल Lena, करते हैं ना, तो the more gratitude you can Get. harness for the bills you have paid, तो हम लोग उतने ही मनी को मैजिकली मैग्नेटाइज करेंगे एंड अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money." And feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid. Yeah. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money. ये समझ में आ गया कौन से बिल में क्या लिखना है? Thank you for the money when we are going to pay, and when we have paid, then we will write thank you paid. जैसे ग्रोसरी का भी अगर हम लोग कोई वेजिटेबल्स आया वेंडर का, तो वी हैव ऑलरेडी पेड, तो वो जो कच्चा बिल भी आता है ना, दैट विल ऑल्सो, उसमें भी मैं तो उसमें भी लिख देती हूँ थैंक यू पे. पेट्रोल पंप में मैंने फ्यूल भरवाया, तो वो भी जो आता है उसमें भी थैंक यू पे. wherever whichever bill you receive, just after pay you write thank you pay. And जो हम लोग का ड्यू है उसमें we can always write thank you for the money. But whenever you write, you should always think about the services it has provided, not like oh god thankfully I have paid the bill. वैसे grudges के साथ और complaint के साथ नहीं करना है. Then you are not attracting, you are making it go far away from you, the money. So better है कि जब हम लोग वो लिख भी रहे हैं, then think about the services it has provided and feel grateful for that, and then you write. Continue, Divya. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. Wow. The तो यहाँ abundance. पे क्या बोल रहे हैं कि it is not कि हम लोग अगर 1000 रुपीज या 15,000 जो भी बिल पे किए हैं तो उतना ही आएगा.
It can be, it can come to us in tenfold or hundredfold. So it's like how strong your feelings are. अभी आज मनी मैग्नेट पे था, today only I received my fees. हम लोग, wow, what a good day to receive my fees. So that's like magical because I was not expecting today. So all of a sudden. So we should always be grateful for the money we have. Yes, continue. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. हाँ जी, तो इसमें क्या है, जैसे कोई और भी आता है, किसी को हम लोग देते हैं ना आजकल, वो पीपल हु कम टू अ कार एंड आस्क फॉर इट, अगर हम लोग 10 रुपीज भी दे रहे हैं, 5 रुपीज भी दे रहे हैं, बट वी शुड गिव इट विथ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन इट, कि ये 10 रुपीज के भी इसके बहुत, इसके 100 हो जाए। तो वो हम लोग जो उनको दे रहे हैं ग्रेटिट्यूड के साथ, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स के साथ, उनके तो 100 होंगे, आप उनके 100 होंगे तो आपके शायद 1000 हो जाएंगे। That's how effective it is, and that's how strong the gratitude plays. So that is very important कि किस feelings के साथ दे रहे हैं, जब भी किसी को दे रहे हैं. This happened with me this Diwali itself only. Diwali पे, during the Diwali I went to this new Alipur market. वहाँ पे there was this man, he was selling some fryams जो नहीं होते हैं उसको कच्चा, वो शायद he was selling, and I had no intention of buying, but then that man was like, Diwali is coming, I have nothing. So, and no one is buying this, and I was like on my own. So मुझे मैंने एक बार start भी कर दिया, and then I realized, because I was doing this session, and I said wait. So I said I can give to my, I was like कि मुझे तो लेकिन चाहिए नहीं, but then I thought I can give to my house help also. So I said you give me 5, and then he was shocked because no one buys as so many packets, And then उसको तो he was so obliged. I mean वो तो मेरा गाड़ी भी निकाल रहा है. He was मतलब overwhelmed कि आपने मेरे लिए इतना किया. And seeing that, I felt so nice that today I've done such a good thing. उसकी दिवाली कितनी अच्छी हो गई जिसमें हम लोग का 200 rupees से कुछ नहीं होगा. We could have like 200 rupees is nothing for us, but उसका एक दिवाली कितना अच्छा हो गया. So that's a very great feeling. And when I gave to that person, बोली इसकी दिवाली best हो. So वो prayer and blessings के साथ देना चाहिए. So, and that time only my birthday was also there. So my mother-in-law came, and I got a lot of money and a lot of gifts this birthday. This birthday was magical for me. So मुझे ये लगता है शायद उसकी prayer, not even शायद, I'm sure उसके prayers की वजह से मेरा birthday इतना magical हुआ. Even in a lockdown. So I feel truly blessed. So किसी को भी money दे, be it staff or whoever it is. ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि we at times we complain, इतना ले रही है, काम तो तुम कर ही नहीं रही है, पेड़ पे लगा है पैसा. We keep complaining and we keep saying, and we don't think before saying all these things. But what we are giving out, we are receiving the same. So we should never complain, and ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए. So that's the chapter all about. It's a very nice chapter and very interesting also. तो हम लोग आज मनी की सर्कल अपने लाइफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, दिस इज आवर चैप्टर ऑल अबाउट. नाउ द मैजिक प्रैक्टिस व्हिच विल बी रीडिंग, क्या करना है इसमें. Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah. So first and the last are the same. ये bill का समझ में आ गया. We have to take the current unpaid bills where we have still not paid, and we have to write thank you for the money and feel as grateful for the service it has provided, for having and also for having the money to pay the bill. और पहले के कोई भी 10 bills which you have already paid, कहीं के भी हो सकते हैं, कोई मॉल के भी हो सकते हैं, कोई ग्रोसरी वेंडर्स कहीं के भी हो सकते हैं, you can always take those bills if you have them,
और या फिर ऑनलाइन में कोई बिल आ रहा है तो उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या वहां पे ही लिख दो, एंड यू कैन राइट थैंक यू पे एंड फील एज ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैड टू पे दोस बिल्स। तो हम लोग पैसे को दो तरीके से बचा सकते हैं, एक तो कमा के और मतलब दो तरीके से पैसे को रख सकते हैं, एक तो बचा के और एक कमा के। सो या लेट मी स्टॉप शेयरिंग। हाँ, Yeah, Payal. so you can become rich, हाँ, in two ways, या तो पैसे कमा के या पैसे बचा के। तो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। तो ये भी नहीं है कि हम लोग जैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत है ले जाओ तुम, वो भी नहीं करना चाहिए। दैट्स अगेन प्राइड जिसको बोलते हैं। वी शुड नॉट हैव दोज काइंड ऑफ इमोशंस एज वेल। हाँ श्रद्धा, व्हाट यू आर आस्किंग? Yeah, I was saying ki first we'll write thank you for the money and then after paying the bill again we'll write thank you paid. इफ यू है ना? हैव, जरूरी नहीं है लाइक अगर कोई ऑनलाइन है या जो अभी अनपेड बिल्स है उसमें थैंक यू फॉर द मनी, बट आफ्टर पेइंग यू कैन राइट थैंक यू पे। हाँ, after paying I'll again write thank you paid ना? 10 बिल्स चाहिए जो पहले के पेड है उस पे लिखना है थैंक यू पेड, और अनपेड जो बिल्स है उसमें लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। नहीं, मैं बोल रही हूँ अभी फिलहाल it's unpaid, so I'll write thank you for the money, then after paying those unpaid bills then I'll again write ना thank you paid. लेटर ऑन यू कैन राइट थैंक यू पेड। बाद में तो वो पेड हो जाएगा ना, देन यू विल राइट थैंक यू पेड। हाँ प्रार्थना? And should we can we discard the bill after writing paid? हाँ, यू हैव टू कीप इट। पेड के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इट इज लाइक ऐसा, यू ट्राई टू फाइंड द 10 बिल्स, अगर नहीं है देन यू कैन मेक अभी अगर रिसेंटली कुछ स्पेंड किया तो कच्चा बिल टाइप का हाथ से लिख लो, एक तो बना लो, उसमें लिख दो थैंक यू पेड, क्या पे किया था, एंड देन यू कैन, अगर 10 बिल्स यू कांट फाइंड यू कैन डू दैट आल्सो, मेक अ कच्चा बिल अपने हाथ से। पायल, हाँ रितु? पायल अभी ट्यूशंस के तो सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप, हाँ, तो उनको वापस से स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर लिख भी सकते हैं लाइक, क्योंकि उसका तो कोई प्रिंट आउट या लाइक वैसे कुछ नहीं आता है ना। यू मस्ट बी डूइंग थ्रू पेटीएम ना? यस। हाँ, तो पेटीएम नहीं, पेटीएम नहीं, बैंक से। बैंक से डायरेक्ट हो रहा है तो उसका रिसीट वगैरह कुछ तो होता होगा? नहीं, कुछ आता तो है। टेक आउट, तो अगर या तो वो तो आफ्टर पेमेंट आता है ना वो रिसीट, तो हाँ दैट इज ऑलरेडी पेड। हाँ, तो थैंक यू पेड आप वहाँ लिख सकते हो। हाँ, तो तुम तो पेपर में यू राइट, जैसे ट्यूशन सर का जिनको देना है यू राइट हिज नेम और इतना अमाउंट एंड थैंक यू फॉर द मनी। हाँ वही, एंड आफ्टर इफ इट इज पेंडिंग, हाँ, बिफोर सेंड थैंक यू फॉर द मनी, यू कैन डू दैट। और तो मेंटेनेंस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब भी तो आता ही रहता है, कॉर्पोरेशन, देयर सो मेनी। पर आजकल सब ऑनलाइन आने लग गया एक्चुअली। हाँ, तो ऑनलाइन में देयर आल्सो इट हैज गिवन यू ऑप्शन इन द बुक, ऑनलाइन का तो वहां पे भी जाके आप लिख सकते हैं। यू हैव टू मेल योरसेल्फ एंड देन राइट दैट इन सब्जेक्ट, कैपिटल में सब्जेक्ट में वहां पे लिख दो कैप्स में, यू कैन डू दैट। whoever has written with सब सोच के she has written। तो और जब भी मनी हम लोग को मिलता है या वी शुड ऑलवेज से थैंक यू, दैट इज हाउ एनर्जाइजिंग। मनी को भी हम लोग ऐसे हाथ को सैनिटाइज और एनर्जाइज करते हैं ना आज हम लोग अभी आजकल, तो वैसे मनी को भी करना है, और उसका सैनिटाइज कैसे करते हैं? बाय सेइंग थैंक यू। So whenever we receive money, we should always say thank you after receiving, and then we should put it in a purse or pocket or a wardrobe, whatever, wherever you wish. Yeah. Right. So every time, तो इससे क्या होगा, हम लोग का money का भी जो energy flow है, it is starting from now. And whenever we are receiving, whenever we are giving, see receive के time में तो सब बहुत खुश करके wow thank you बोल देते हैं मन से, but the main thing is देने के time कौन कितना करता है, when paying the bills, that is important. Whenever from now onwards, whenever we are paying the bill, तो हम लोग जैसे मैंने ये चैप्टर जब नहीं किया था, I was doing at that time my daughter shopped a lot. एक दिन में ही मेरे मन में वही आ रहा था पूरा, मतलब हम लोग कितना शॉपिंग की है, and I was just scribbling, and then I realized and came across this chapter. हम लोग कोई बात नहीं, but she's so happy today. तो उसके वो मनी जो दिया उसके बाद उसके जो consequences है, you should think about that and thank you for the money I had through which I could make my daughter so happy. हम लोग कितना प्लेजरेबल हो गया है, सो थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू।
उसके बाद थोड़े परसेप्शन, थोड़े थॉट्स चेंज हो जाते हैं. Right. So any question or any query regarding today's chapter or sharing of yesterday's assignment? Yesterday सबने किया ना फूड को लेके? प्रार्थना तो at time she did. Yeah, not all the time. प्रियंका का ये तो बहुत ही अच्छा शेयरिंग था. इवन माधुरी, रेस्ट, अनु, श्वेता, वंदना, इवन इफ यू नॉट कुकिंग दीदी, की या थी. फूड वाला तो कर किया था, लेकिन हाँ. कल मैजिक रॉक नहीं हो पाया, तो क्या करूं? नहीं हो पाया नहीं. ना, अब तो वो रात को ही होगा. हाँ, नहीं मतलब उसके लिए कुछ तो और तो कुछ नहीं करना, अब तो रात को ही करूँ, बस उसको डेली करते रहो. दैट इज बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड का है. अभी तो कोई पॉइंट नहीं है. हाँ, अभी तो कुछ नहीं है. So you what you can do is you can set a reminder or you can pay gratitude कि अपने ब्रेन को थोड़ा ज्यादा की मेमोरी को gratitude दो कि मुझे याद रहे. If you keep नहीं याद था. एक्चुअली आई वाज इन अनदर रूम एंड माय रॉक वाज इन अनदर रूम, तो वहां पे जाना हो नहीं पाया. सो आई जस्ट प्रेड, वैसे ही प्रे करके सो गई थी. हाँ, कोई बात. At least you prayed that time, no? You paid your gratitude. या That's also रॉक हाथ में नहीं था, बस वैसे ही प्रे हो गया था. हाँ, then also is fine. That means you remember it was just situational वो था कि you could not be in that. That's okay. पायल, आज तो सुबह हमने ब्लेसिंग्स 7:30 पे लिख दिया था. Oh, wonderful, Priyanka. Before I did my breakfast, before I entered in the kitchen for the breakfast. Wow. As well, let me write. It takes me 5-6 minutes. Yeah. वो जब तक वो स्टार्ट नहीं करो ना तो एक एफर्ट लगता है. एंड वंस यू गेट इनटू दैट हैबिट, ओ गॉड, आई वाज जस्ट स्क्रिबिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट फॉर ये 5-6 मिनट्स के लिए. इट्स सो इजी टू डू. इट्स सो इजी टू डू. I got up, I did my exercise, then I said, okay, let me write first, then I entered in the kitchen. I said, नहीं तो वो सुबह से शाम तक दिन भर वो चलता ही रहता है, काम. Exactly. So this is called, structure. एक तो structure बनाना. There will be a chapter on to-do list also. उसके बाद से तो हम लोग का सब बहुत ठीक हो गया है. to-do list बना लेने से कौन से टाइम पे क्या करना है, it becomes very easy. Otherwise you keep postponing or keep forgetting. और उसमें वो and every time you have a stress on your mind कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. And अगर वैसा कुछ बना लेते हैं, it becomes easier. You don't have to remember, it is all written out there. और वैसे ही देखोगे जितना सोचे थे उससे ज्यादा काम कर लिए. Right. Today I bless all my body parts. I written everything, like I said क्या लिखें? फ्रिज, टीवी और इन सब के बारे में तो लिख लिया, basically. Right. So I feel let me write this. ठीक है. Body parts तो very vital. I mean health तो सबसे important है. Yeah. तो करना चाहिए. वो तो मैं डेली करती हूँ. डेली. हेल्थ ही नहीं होगा तो वेल्थ कैसे एंजॉय करेंगे? Yep. That's true. That should be like a daily gratitude वाले में होना चाहिए. Daily. जैसे जैसे चैप्टर जा रहे हैं, it doesn't mean that is only restricted to that particular single day. अभी क्योंकि प्रैक्टिस में आने में टाइम लगेगा. लेटर ऑन अगर लग रहा है मुझे हेल्थ में डेली चाहिए, डू इट डेली. हेल्थ का तो डू इट डेली. You can. It's not restricted to that particular day. Every day you can pay gratitude. But we can repeat the blessings, right? We can repeat the blessings. Suppose. मतलब हम लोग रिपीट कर सकते हैं ना कोई भी चीज को, एक या दो चीज को लेके कोई भी चीज बार. हाँ कर सकते हैं. और तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि सुबह उठते ही बोले ना टूथब्रश से सिर्फ जो स्टार्ट होता है, एंड ऑफ द डे यूज. सबको कर सकते हैं. आज इसको किया, कल उसको किया. कितने एरियाज है अपने हम लोग के लाइफ में, सबको कर सकते हैं. Yesterday night before I went to the sleep, I said कि what I'm gonna write tomorrow. I was just thinking. I said okay, let me write like body तो आप अपनी body organs के ऊपर आपको लिखना है, तो you can write कितना भी. Right. So you can write a lot. Each and every part. Eyes, 5 senses हैं, अंदर के कितने organs हैं, सबके लिए. Your joints है, hair है, every part. You can write gratitude for each and every part. So what should we write for the hair fall? Hair fall जो होता है उसके लिए क्या लिखना चाहिए? वो तो आपके ड्रीम लिस्ट में आ जाएगा. वो मैंने शायद शेयर भी किया एग्जाम्पल में, because I do that. वो देखा हमने. Right.
I to write that also. And if you want something else like a bounce also, a curl also, a color also, you can keep on adding. Right. Oh, So every day करना है. Concentrated gratitude is the like area in which you want more. You know, जो वो start हो जाए you want, then you know उसमें आप start कर सकते हो. उसमें मतलब daily दे सकते हो, आप लिख सकते हो. Right? okay. Anyone else? Any query? नहीं. तो राइस एक्सपेरिमेंट जरूर करना, पॉलियाना मूवी जरूर देखना. एनी शेयरिंग, ये अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं आ रहा है, चाहे छोटे से छोटा चीज हो, बट आई थिंक पीपल मस्ट शेयर, यू नो, लाइक प्रियंका शेयर, माधुरी शेयर. उससे क्या होता है, अदर्स को भी इंस्पिरेशन मिलता है. आई थिंक इवन रिंकू रिंकू शेयर, उसकी नींद की प्रॉब्लम खत्म हो गई. आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी फॉर हर, यू नो. सो दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम, नींद नहीं आना. माय गॉड. सो यू आर स्लीपिंग पीसफुली नाउ. That's why I thank you every day. I'm so glad this also. So we should be grateful to each other. तो आप एक दूसरे से सीख रहे हैं और ऐसे ही शेयरिंग करने से एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं. यू नो, पहले था कि किसी को पुल डाउन करके आप कभी ऊपर नहीं जा सकते हो, सबको साथ में लेके चलो. दैट इज लेके मोर चलो. एंजॉयबल. दैट इज मोर एंजॉयबल. यू नो, मोर द मेरियर. नो See, कॉम्पिटिशन. Payal, because of you, we are knowing so many people in this group actually. We haven't met each other, but by looking, by talking to everyone, it's bounding हो जाता है, एक bounding होने लग गया है. फर्स्ट डे मैंने बोला था ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विल बी लाइक वन फैमिली. और वो देखो, वो उस समय लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यू नो एवरी डे इट ग्रोज ऑन यू. यू नो, एवरी डे वो अफेक्शन ग्रो करता है. तो जैसे ये ग्रेटिट्यूड के लिए भी बोलते हैं ना, पहले वो फेक लगेगा, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू. फिर वो एक टाइम में तो किसी से भी बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, लेकिन वो ऊपर का होता है, अंदर से तो फीलिंग्स नहीं आती. तो वो जैसे मैं बोलती हूँ फीलिंग्स, तो आपको लग रहा है थैंक यू तो बोल रही हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आ रहे, वो ग्रेजुअली आने लगेगा. एंड इफ यू रीजन इट आउट, जैसे यू नो, इवन इफ इट इज अरेंज मैरिज, क्या फर्स्ट डे से लव हो जाता है? नहीं होता. ग्रेजुअली इट ग्रोज ऑन यू. यू नो, व्हेन यू स्पेंड टाइम टुगेदर, यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर, तो वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, फीलिंग्स अपने आप आती है. तो इवन विद, यस श्रद्धा. हेलो. हाँ, लव मैरिज में भी एक दिन में लव नहीं होता है, टाइम लगता है. तो वही टाइम लगता है, इसीलिए तो बोल रहे सब में टाइम लगता है. तो इवन दिस, यू नो, हम लोग को लग रहा है एक दिन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बट यू नो ग्रेजुअली इफ वी कीप प्रैक्टिसिंग ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू विल फाइंड कि ओ गॉड, आई एम सो अटैच. मतलब कितना फीलिंग्स के साथ अपने आप आ रहा है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सबको हम लोग को लगता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जा रहे हैं. दिस थैंक यू इटसेल्फ इज ओनली पेइंग ग्रेटिट्यूड. हम लोग तो मनी को, हम लोग को स्टार्टिंग से वी स्टार्ट, यू नो, वी गिव रिस्पेक्ट, ऐसे करते ही थे, हम लोग के कल्चर में ही है. Nowadays, like, you know, we don't give importance to it, but either you say thank you or you just do this. That's also paying gratitude. So whatever way you did, but whenever you say thank you for the money, thank you. जब भी किसी से भी, क्योंकि किस एनर्जी के साथ वो आ रहा है, सामने वाला किस थॉट्स के साथ दिया है वो मनी, वी डोंट नो, एंड स्ट्रेट वे हम लोग उसको रख दे रहे हैं. तो इट्स बेटर व्हेनेवर समवन गिव्स, हम लोग अपने आप चार्ज करेंगे उसको बाय सेइंग थैंक यू, चार्ज करके एंड देन फिर हम लोग रखेंगे. और किसी को देंगे तो भी हम लोग उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड के साथ देंगे. वी विल रिसीव इन, यू नो, डबल ट्रिपल फोर फोल्ड, आई डोंट नो कितना ग्रेटिट्यूड के साथ दिया, उसे बहुत ज्यादा अबंडेंस से मिलेगा. बी इट इन एनी एरिया. आप किसी को बहुत सारा प्यार दो तो प्यार ही मिलेगा. एंड आप उसको अगर नफरत दोगे तो नफरत मिलेगा. दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. अच्छा, ड्रीम लिस्ट आई वांटेड टू टॉक. आप लोग अपना अपना ड्रीम लिस्ट कुछ शेयर करो. अगर वो नहीं होगा तो हाउ द एनर्जी विल फ्लो टुवर्ड्स, यू नो, अचीविंग योर ड्रीम. क्या ड्रीम लिस्ट की, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट नहीं होगा, आई विश नहीं होगा, आई हैव, आई एम, और थैंक यू से स्टार्ट करना है. दिस इज हाउ योर ड्रीम लिस्ट शुड बी. एंड प्लीज, मतलब ड्रीम लिस्ट को एवरी डे पढ़ो, एंड जितना बड़ा है उसको एक बार फर्स्ट 10 लिखो. फर्स्ट 10 के बाद फर्स्ट 3 में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड देते हैं, यू नो, टॉप 3 जिसमें. और जितना विजुअलाइज करेंगे उतना अच्छा है. So give some time whenever you are reading your dream, at least top 3, try to visualize that you have already, you know, achieved and dreamed that. Okay, Anu, thank you so much. Anu has to leave. That's what I read in chat.
So please write your blessings and the magic rock thing every day. And So so we, yes, Pratna. for the wish list, we can write thank you, thank you, thank you for the good health, right? Like good health यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा आपका गुड हेल्थ आपको किस एरिया में चाहिए सब चीज में हाँ हाँ तो लेकिन good health has अगर to be कोई चीज में अच्छा चाहिए if you are talking about particular organ या कोई पार्ट का then you have to be very specific because देखो अब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं सूप ले आओ खाली बोल दोगे अरे कौन सा सूप लेके आओ you have to be very specific when you are ordering. Otherwise, in general, we can write thank you for the good health, right? Thank you for me being fit and healthy. Fit and healthy. Okay. So that is like your everyday affirmation बोल लो वैसे उसमें मतलब ड्रीम में जैसे I've written thank you that I've overcome all my fear. Fear word नहीं यूज करना है that's a negative word इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसका अल्टीमेट क्या होगा you have become strong so you can use the word strong but you cannot use the word fear. And जैसे anxiety के लिए फिर क्या यूज करें? I'm calm, I'm composed. I'm calm. Okay. Right, you cannot use any negative word. No negative word in your wish list or dream list or any manifestation किसी में भी. इसीलिए मैं बोल रही हूँ share with me. Thank you so much प्रार्थना for sharing. इससे बाकी को भी आइडिया मिला है. No negative emotion. वो feelings chart का एक तो print out निकाल लीजिए. Stick to it. And whenever you get into above the line and below the line के emotions, always check which emotion like is I'm going through. अगर below the line है quickly transform yourself and above the line लेके जाओ. You have to stay मतलब खुश रहो happy रहो बिंदास रहो basically. ये नहीं है कि ये सब कोर्स करने के बाद कोई साधु संत बन रहे हैं हम लोग वो नहीं. This book doesn't say that. It's all about just gratitude. बस thankful रहो and खुश रहो. वो सब negative fear emotion वो सब नहीं आना चाहिए. So this book only tells you that. It doesn't make us saint. वैसे फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ we can go out, we can party, we can do whatever we want to, the way we are. But then just don't use any negative word. जो दूसरों के साथ ill feeling नहीं होनी चाहिए, जैसे emotions नहीं होने चाहिए. Just be thankful for wherever you are, whatever you are doing. Right? So we will always prosper and attract more and more and more. And feelings are very important in this. It looks difficult at time, but it is, trust me, it's not difficult. वो हम लोग ने कभी try नहीं किया ना. When once it will become a part of our lives and लगेगा कि अब हम लोग को सोचना पड़ता है सुबह उठ के ब्रश करना है. We don't have to. वो automatically washroom में जाते हैं. Do we have to make an effort? We have to think. We don't even question. So this is how gratitude may be question वगैरह कुछ आएगा ही नहीं. This will be like part of life. अरे ये तो मुझे करना ही है, मुझे thankful तो होना ही है. Right. So thank you so much for the session, and thank you so much, Divya, for reading so beautifully. So let's pay our gratitude. And magic ingredient will continue. ये नहीं है कि उस दिन का chapter था and done. It has to be a daily affair. Just start doing that. तब फिर अभी वो छोटे छोटे magic अपने आप होने लग जाएंगे. बोले oh wow, ये food में तो मेरे साथ बहुत होता है. And like I cook at times I don't feel like cooking. I told you ना मेरे neighbor के यहाँ से उस दिन आ जाता है dish. मतलब wow, I didn't feel like cooking आ गया. She sends me. और she has cooked a lavish dinner. और वो मेरे यहाँ आ जाता है. 3-4 बार हो गया. हम like इतना magic हो गया. I never wanted to cook today. I didn't feel like, and it has come. See. Okay. So this is how it सब start हो जाते हैं थोड़े-थोड़े. And you start living more. Yes, Rinku? फूड के साथ तो मेरे साथ रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ है. लाइक जब मैं शादी करके आई ना तो हमारे यहाँ वो रिवाज होता है दिवाली के बाद अन्नकूट बनता है नेक्स्ट डे. ठीक है. तो आई वाज न्यू तो मैंने मतलब डर लग रहा था कैसे कर पाऊंगी नहीं. तो मैंने कढ़ी बनाना होता है उसके साथ में. तो कढ़ी में मेन इंग्रेडिएंट है दही और बेसन. ठीक है. मैंने बेसन नहीं डाला. ठीक है. आई फॉरगॉट.
बन गया, सब कुछ हो गया, अब भोग लगाना है। हमारे यहाँ क्या सुबह भी भोग लगता है प्रसाद, और चूंकि वो अन्नकूट बना था तो वो भी भोग लगेगा। अब भोग लगाना है, माँ बाबूजी मतलब मेरे इन लॉज आ गए बाहर के, अभी भोग लगाना है। देन आई रिमेम्बर, ओ मैंने तो बेसन ही नहीं डाला। हम भोग लगाए और भगवान जी को प्रणाम किए कि भगवान जो हम बनाए हैं आज आप इसको अच्छा कर दीजिए बस। हमको मतलब मेरे को लग रहा था वो लोग डांटेंगे या पता नहीं क्या। एंड यू विल नॉट बिलीव, एनीवन डिडंट गेस्ड ओनली, किसी को पता नहीं चला कि इसमें बेसन नहीं है। बट इट वाज सो मैजिकल। मतलब मैंने बाद में माँ को बताया कि माँ हम तो आज बेसन डालना ही भूल गया था इसमें। माँ बोले पता तो नहीं चला इसमें। मतलब हम भोग लगाए तो भगवान जी को बोले जो इसमें कमी है वो आप पूरा कर दीजिए। It was with the heart. The wishes was from the heart, you know. हाँ वो हम लोग को पता चलता है उस समय। देखो वो इमोशन ही अलग होता है, प्लीज भगवान प्लीज प्लीज। ये जो इमोशन है ना, कि जो यही फीलिंग्स है, these are the feelings which I'm talking about. ये जब अटैच हो जाता है ना, वो चीज होती है। अभी ड्रीम लिस्ट में भी मैंने 1-2 ड्रीम्स ऐसे लिखे हैं, मतलब आई हैव टू रिटर्न कि मींस आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो व्हेन आई एम रीडिंग दैट ना, तो वो मेरे को शिवर होता है और पूरा इमोशनल क्यों मेरे को वो मिल गया। मतलब आई एम सीइंग दैट, आई एम विजुअलाइजिंग कि वो हो रहा है मेरे साथ। That's the most powerful tool है visualization. Do that every day. That's the most powerful tool to fulfill your dream. If you can do that every day, that nothing like it. Give some time. उसमें थोड़ा सा time देना होता है. That's wonderful, Rinku. Nice sharing. और जब भी कुछ अचीव हो, ऑलवेज सेलिब्रेट। ये नहीं है कि हम लोग बोलते हैं ना नजर लग जाएगी, शेयर नहीं करेंगे, ये सब बोलने की बातें हैं। जितना शेयर करेंगे वो उतना फलेगा। इट्स नॉट, वो नजर फजर कुछ नहीं होता है, वो तो आप अपना सोच है। So anybody else wants to share or any query? माधुरी, वीडियो ऑन नहीं रहने से मुझे समझ ही नहीं आता। No, Payal. Okay, thank you, Madhuri. Thank you, Payal. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Payal. See you tomorrow, and please take gratitude and do follow and practice करो. Watch the movie Pollyanna. Dreamless पे एक बार ध्यान दो सबको. इधर change the language, प्रार्थना. Everyone change. No negative words. Just check. No, not. Universe को समझ ही नहीं आता है. Okay. I've not used anywhere no not. I've just used fear. अगर लिखोगे I don't want, तो वो don't नहीं लगेगा. Don't वो समझेगा ही नहीं. I want. Anywhere. Never do that. Okay, Thank you so much. Thank you. Bye. See you Thank you, tomorrow. Payal. Bye. Have a nice day. Thank you.